after this we have Dr. Showkat Rasool. He is working as assistant professor in agri engineering, and Dr. Showkat is a versatile personality, pro-robotic personality, I must say, of our institution. He has vast experience in the field of robotics and IoT, and he has secured his PhD from IIT Kharagpur. I would like to invite Dr. to give a presentation. Assalamu alaikum, all of you. Thank you, FAHEEMA ma'am, for introducing me and giving me an opportunity for a lecture in this training program. First of all, before I introduce myself, I just want to have a brief info about the participants. I guess there are students also, right? Some students are also there, and some MSME, I guess, MSME participants also, right? Yes. And can you briefly tell me about your backgrounds? All are from the science background? Almost? Yes. Engineering. You are also from engineering. Okay. So I guess it will be easy for me. Basically, this is a heterogeneous group. We have CEOs of some FPOs, we have officials from 9 departments. We have engineering students, we have MBA students, we have engineers. Then we have some those having startups with the background of agriculture, family background of this cultivation and all that. Most of them are. Okay. Okay, let's start. I guess there were many things about the finance, and I was thinking about I should also have joined before, so that I can also get familiar what are the financial terms about this, because nowadays everybody is interested in startups, and there's no I just also want to confess that sometimes I also think that I should also have my startup, and I should just leave my job and think about the startup. So it's about me. My name is Showkat Rasool. I have started my journey, professional journey from the schools only, completed my BTech here, and then I went for my masters and PhD to IIT Kharagpur. I spent almost 6 years there, and after that I worked briefly for Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) for about 2 years as scientist, and then I went back here in SCOS as an assistant professor. So we are going to discuss many things in this lecture. We'll see how the time permits us. But this is the title of the lecture that I'll be focusing on: Sustainable Farming through IoT and Robotics, Architectural Innovations for Resource Management. I guess there's no need to explain this slide much, but let's have a brief introduction what our agriculture system is going through. Lot of problems are there. These problems are in different states of the crop development. Okay, maybe one of the first problem is that we are still relying on the prodigal farming, traditional methods of the farming, and at the same time, when we are relying on the prodigal methods of farming, traditional methods of the farming, then obviously our natural resources, which is soil, land, maybe water sources also, they are degrading. And when there is farmers are not aware about the proper practices, package of practices, it obviously leads to indiscriminate use of every input. Maybe seeds, fertilizers, water, or whatever inputs we apply to our fields. So this causes both increase in the production costs and at the same time causes environmental pollution also. And one more problem that we are facing in our agriculture system is poor poor extension reach to farmers. Farmers are not aware what are the best package of practices that we need to follow in our fields. And even though all the conditions may be favorable, our environment may be favorable, we may get a good produce and everything, still we have a poor market linkage
which causes our produce not to market properly, and at the same time it leads to an economic distress to a farmer. So many people may have many solutions. How can we overcome these problems? Some may say, okay, you go for the organic farming. Some may say you may go for a cultivation in polyhouses, and some may say other things. Maybe they all may be true to some extent. Everybody has its, I can say, a methodology to counter these problems. So these are the key issues. Okay, as you are here in this training program talking about the greenhouse advantage. So one of the first justification of establishing the greenhouse is that or protected cultivation or vertical farming for that sake is that our land resources are shrinking at a very faster pace. We are converting our fields to maybe other sectors. We are shifting our fields to the other sectors, which is causing shrinkage to agricultural land. And at the same time, our population is increasing that needs to be fed. But when I talk of increasing the population, we all are aware that okay, each one of us needs house to live in. Okay, अगर हमारे पास agricultural land है, but at the same time मानिए 4-5 भाई हैं, तो उनको तो रहने के लिए जगह होनी चाहिए, उनको तो मकान बनाना ही है. That's the first thing that they need to do, and that ultimately leads to shrinkage of agricultural land. And now, what we need to do as a responsible person, we need to find an alternative way we can find so that we can just offset the effects of these shrinking land effects. And I guess one of the methods is that we should go for a maybe vertical farming or protected cultivation or whatever it is. At the same time, when we talk of these are the issues, we have some certain advantages also. Maybe in Jammu and Kashmir, in Kashmir particular, majority of the population is literate. Okay, we have access maybe in India also, in other parts of the world also. These mobile phones and smartphones are become common. Okay, literacy rate is good. We have access to internet. Why I'm saying access to internet and these things, because these are related to my topic. That's why I'm saying this. At the same time, we have rich biodiversity. Okay, particularly in Kashmir, we have rich niche and we have niche crops, medicinal crops, opportunities there. We have natural resources. We have favorable conditions for these crops, which cannot find in other parts of the India, in other parts of the world also. So the opportunity is there, and we need to find an appropriate way to tap this opportunity and establish our business. Before I move on to the main topic, let's discuss how this world has gone through the industrial revolutions. Everybody knows there were 4 industrial revolutions, right? Before the first industrial revolution, it started with mechanization. Okay, I'm talking about general industrial perspective. So we were having people who were manufacturing things manually. Okay, but then we started introducing machines, and we started fabricating the things that we use in our daily life through machines. So what happened in first industrial revolution is the substitution of this took place. Substitution of these manual labors or manual thing by machine. That was a substitution. The second industrial revolution took place because we arranged that assembly line. We made our assembly line proper, and we increased the scale of economies. Okay, earlier we used to make maybe 4 products in a day. Now we are making hundreds of products in a day. So that is increasing scale economies. Mass production started. That was the second industrial revolution. The third industrial revolution, it was about automation. Okay, so we started automating the things. Earlier the machines were operated by the humans, but now we started automating certain operations, due to which input costs of these products start reducing. When the input costs reduced, and it also gives impetus to our that industry, and this was known as the third industrial revolution. And the fourth industrial revolution that we are currently facing, we call it Industry 4.0, is because of what we call as a
robotization and the technologies like artificial intelligence and blockchain. Okay, so this added values to our products. And in the similar lines, when we talk about the industry, then we can talk about agriculture also. So the same, these revolutions in industry had a similar impact on the agriculture also. We had agriculture 1.0, traditional use and human and animal resources. Then there was agriculture 2.0, mechanical. Then there was a third industrial revolution, some sort of automation, and agriculture 4.0 we also call it. It's a smart agriculture. See, so this is the trend of that 4 industrial revolutions of agriculture. And if I say where we are here in between agriculture 2.0 and agriculture 3.0. And the developed world is around beyond agriculture 2.0. Now the people have started using drones, robots and other things. So, can anyone of you guess what is this? Which farm? It is a view of fields of Scotch only. Okay. So, but this is not an Google image view. This is the picture that we have taken in our room. Okay. So, why I am showing this, before I elaborate this, but let me give you a little hint about where we are going. We are not. We should not think that we are we are lagging behind. We are also progressing in a good direction. Earlier, we used to have an orchards, the conventional orchards. There were no spacing, hazard farming, and everything. Now we have started towards high density and medium density orchards. मुझे लगता है मैं किसी भी district में जाऊँ जहाँ ये apple production हो रही है, I can find these high density orchards everywhere. So this is the first step. We are growing. We are growing in the right direction. Maybe some people say, okay, this is not good and whatever it is, but this is the modern way and we are just catching up with these modern ways. So when we talk about high density and medium density orchards and when we talk about robotization and automation, so this high density orchards, when there is a sort of a proper way of establishing orchards, it gives us opportunity that we can introduce machines in our orchards. अगर पहले हैफाजर्ड ऑर्चर्ड्स थे उसमें तो मशीन भी नहीं लेके जा सकते हम. अब कितने बड़े ऑर्चर्ड्स थे जो जिनका साइज बहुत बड़ा था उनमें मशीन्स का ऑपरेट कराना बहुत मुश्किल था. अब हमारे पास हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक द मशीन्स इन बिटवीन these orchards, and when we talk about machine, we can also take robots in between these orchards, and we can automate and complete our operation autonomously. So this was my point about showing these pictures. Now moving on to the main topic. Okay, I am discussing here the smart agriculture. I am discussing about robotics. I am discussing about automation for what? For resource management. Okay. We want to manage our resources in the proper way. So, I can say this agriculture 4.0 or smart agriculture is being run or is being run by maybe 4 technologies. The first technology is Internet of Things. Okay, you note down these technologies, Internet of Things. The second technology is artificial intelligence, AI. And the third technology is robotics. And the fourth technology may be blockchain. So these are the 4 technologies which govern smart agriculture. So let's discuss about how we do things in our farms and how we can translate or how we can change these things into smart agriculture. पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो भी maybe many people may be associated with the agriculture and some students are from the agriculture background. They all know that we are doing this agriculture. Can you tell me, are we recording our data in our fields? Are we recording our data? Maybe rarely we are recording our data. I am saying that even the farmer should record his data. How much input he has applied, how much water he has applied in the previous season, and how much fertilizer he has applied, which type of fertilizer he has applied, and what output he has got. At least he will get an idea, okay, whether I am applying it rightly or wrongly. Again, what is the output? Output is the yield. So the first thing is that where we lag is that we are not recording our data. That's the main problem. And
When we talk about recording the data, let's see many students are there, maybe most of you have maybe some are from the science background, they know they maybe have some sort of experience with the labs. So what you do is that you take some instrument, okay? Maybe you have some sensor or instrument, you take it to the field, put it into that environment where you want to take the data, and you record the data, then you retrieve that sensor, get it back to the lab, maybe in the computer, and then you retrieve that data. ये आप करते थे, ये हम usually करते थे traditionally. Now what I am saying is that we have reached a level where we can deploy our sensors permanently in a field. We don't need to go and retrieve it back. We can deploy the sensors permanently in the field. And this sensor can transmit data to our control station. So that by that thing, we can deploy maybe variety of sensors and maybe thousands of sensors in the field and can collect various types of data that we need to collect. Now the thing is that, okay, पहला तो ये था कि हमें जो communication system था उस sensor के साथ वो नहीं था. But now, as you know that the world has progressed, now we have internet availability. Okay, these sensors and this control while we are storing the data, they communicate with each other. In a layman's terms, this talk to each other. Sensor जो है वो बात कर रहा है किससे? जो उसका कंट्रोल स्टेशन उससे बात कर रहा है, उसको डेटा दे रहा है, और ये कंट्रोल स्टेशन उससे बात कर रहा है और उसको जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको क्या करना चाहिए. सो ये बात करने का जो सिस्टम है, दिस इज बेसिकली they have some sort of medium by which they talk to each other, this sensor and this control station or whatever. So the medium through which they talk to each other is internet, and this sensors, control and other things, this is basically things. That's why we call it what? Internet of things. So all of you may be now clear that this technology would have been possible only when there is what? Internet. आपने देखा होगा कि maybe from last few years, 5-6 years से ही ये maybe 10 years ये इंटरनेट ज़्यादा अवेलेबल हुआ है. जब इंटरनेट अवेलेबल हुआ तभी ये पॉसिबल था कि इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हम ट्रांसफर कर सकते थे. That's the one thing. The second thing was that पहले I will tell you, I joined IIT Kharagpur in 2012. So we were having some sensors there. Load cell जो simple load cell होती है ना जिससे हम force वगैरह measure करते थे. That used to cost around maybe 3 lakh rupees. और वही cell जो है you can get it from 10,000 and 50,000 rupees. The cost of electronics reduced drastically. The cost of sensors reduced drastically. That's why we are able to use these technologies. So the first thing that I was discussing is that we need to take the data from our field. That is, we need to monitor our fields, right? We need to monitor our fields through these sensors. We need to collect the data, all the data that is relevant to it. You people may decide what data is relevant and what actions you need to take. Okay, when we get the data, okay, हमने एक सीजन का डेटा लिया या हमने 2-3 सीजन्स का डेटा लिया, हमने लीन का डेटा भी लिया. What after that? We have now a possibility that we can predict the future by this data. We can predict the future actions by this data. And this prediction is possible. जो पहला बार हम monitoring, that was possible because of the Internet of Things. क्योंकि हमने बोला कि भाई डेटा लेने की ज़रूरत है, सेंसर्स की ज़रूरत है. That was monitoring. That was possible with the help of what? Internet of Things. The second one, prediction, is possible when we have that type of prediction tools available to us. Prediction तो हम पहले भी करते थे. Regression models थे, mathematical models थे, या maybe जो हमारे दूसरे types के models थे वो हम करते थे. लेकिन एक ऐसा system अगर होगा, I am just talking about a layman's language. मान लीजिए हमारे पास एक black box है. Okay, this is a black box, and this black box doesn't know anything. हमने क्या किया? हमने इसको इनपुट डेटा फीड किया और आउटपुट डेटा भी दिया यहाँ से. क्या हमने इसको बोला भाई जब ये इनपुट डेटा होगा तब ये आउटपुट डेटा होगा, तो ये एक हिसाब से ट्रेन हो गया ये ब्लैक बॉक्स. तो फ्यूचर में कोई भी डेटा अगर होगा वो हम इसको इनपुट करेंगे तो ये प्रेडिक्ट करेगा कि भाई फ्यूचर में क्या होगा. सो दिस ब्लैक बॉक्स वी कैन कॉल दिस इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So this electronic system, we are putting an artificial intelligence to it, and we are forcing him to think about this data, just remember this data, and tell us about the future predictions. Okay? In simple terms, this is your what? Artificial intelligence. And when you will predict the future events, maybe you may predict the occurrence of the disease, maybe you may predict the moisture content of the field, or some other parameter of the field, then you can decide what you need to do in your field.
you may decide, okay, whether I should go for an irrigation, whether I should go for a fertilizer application, whether I should go for what pesticide application, any जो भी आपका operation होगा. Now you have decided, okay. इसके बाद क्या करना है? अब उस फार्मर के पास एक रिकमेंडेशन टाइप की आ गई कि भाई ये करना है. The farmer has two choices, either to go to the field, do that operation. उसको ये आया कि भाई आप जो है इरिगेशन करो और इतनी इरिगेशन अप्लाई करो. वो फील्ड में जाएगा और इतनी इरिगेशन अप्लाई करेगा. That is the one option. The second option is that we have some other system deployed in our fields, which will automatically irrigate our fields, which will automatically do the pesticide spraying in our fields or any other operations. So this last step is what? Automation. So first one was monitoring, that was possible with the help of Internet of Things, smart sensors. The second one is prediction, that was prediction and decide, that was possible with the help of maybe this artificial intelligence, machine learning, deep learning. And the fourth one was automation, that is possible with the help of robotics. Okay? So these are the four things by which we can tackle the challenges, by which we can tackle the problems that are in our agriculture. So this is about monitoring. अब आप monitoring कैसे करेंगे? Either maybe some people may be aware about the remote sensing technology. Okay, you have satellites that are surrounding the Earth and taking all the imagery data from the Earth. You can analyze this remote sensing data and get the insights. ठीक है? One more is your remote sensing में दो चीजें आपकी आएगी. पहले हमारे पास satellites ही थे. अब उनकी resolution जो थी, because the satellites are very remote from the Earth, so resolution का issue आता था. Now we have drones also. Okay, the drones can monitor our fields. How? Let me give you a small insight about how drones actually monitor our fields. Usually जब हम देखते हैं, जब मैं कोई भी चीज़ यहाँ, for example मैं आपको देख रहा हूँ, किसी ने black पहना है, किसी ने blue पहना है, किसी ने red पहना है. Basically these are three colors, R, G and B, red, green and blue, which are visible to our eyes, जो spectrum RGB बना हुआ है. और combination of that, अगर red और blue आप mix करोगे तो एक और color बनेगा. इसका combination जो है वो हम देख सकते हैं. But there are some other range which are not visible to human eyes. Okay, for example infrared, near infrared. तो ये जो range है, इसको कोई और कैमरा दे सकता है, हमारी आंखें नहीं दे सकती है. For example, हम chlorophyll की बात करें. Chlorophyll is active at around some maybe spectral range, 740 nanometer or something. 740 and some other. It is near infrared and red edge. Something is like that. So अगर हमें chlorophyll content देखना है फील्ड का, तो हम आंखों से तो ग्रीनिश हमें ये दिखेगा, लेकिन एक्चुअल क्लोरोफिल जो है वो बियॉन्ड रेंज ऑफ आवर आया. उसके लिए हम ऐसा कैमरा लगा सकते हैं जिससे हम ये स्पेक्ट्रल रेंज जो है देख सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ये तो हो गया न्यूट्रिएंट कंटेंट का, बिकॉज क्लोरोफिल इज रिलेटेड टू द न्यूट्रिएंट कंटेंट. नाउ वी हैव डिजीज, पेस्ट्स. ओके, दे मे आल्सो हैव देयर स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स. दे विल गिव देयर स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स व्हिच आर नॉट visible to the naked eye. उन्होंने वो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर दिया at the initial stage only, and then you can predict या आपके फील्ड में डिजीज होने वाली है या नहीं होने वाली है. फोरवार्निंग सिस्टम इसको बोलेंगे. Now we have a drone. We have very sophisticated types of drones available in the market, commercially available. Indian make also. अगर हम Chinese make की भी हम बोलते हैं Chinese से आ रहा है, we have Indian make also. Sophisticated drones available to us that fly at a height of maybe 50 meters. आपने उस ड्रोन में एक कैमरा लगा दिया. एक कैमरा में अभी आपकी वो बात कर रहा था, मल्टी स्पेक्ट्रल. ठीक है, मल्टी स्पेक्ट्रल. मल्टी मींस इट हैज मेनी स्पेक्ट्रम्स व्हिच इट कैन टेक. आपने मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा उसमें लगाया, फील्ड के ऊपर फ्लाई उसको करा, और आपने जो है उससे कुछ स्पेक्ट्रल रेंज देखी, और उससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो आपकी फील्ड में न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है या नहीं. Now moving on to one more camera that is known as hyperspectral camera. You have now instead of maybe 5 spectral range, you have around 200 spectral range. जिससे आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो. पेस्ट अटैक, डिजीज, फंगल अटैक्स या कुछ भी आप उससे प्रेडिक्ट कर सकते हो. Now you put on this whole system is automatic. You define your जो मैंने आपको पहले स्लाइड में वो मैप दिखाया था, that map was actually taken by the drone. That drone is actually crop monitoring and sensing drone. हमने उसको एक इंफॉर्मेशन दे दी, आप इस फील्ड के ऊपर फ्लाई करो. तो उस फील्ड के ऊपर उसने फ्लाई किया, बहुत सारे फोटोग्राफ्स उसने लिए इन स्पेक्ट्रल रेंज में,
और फिर जो है हमने इन सारे स्पेक्ट्रल रेंज के फोटोग्राफ्स को स्टिचिंग की, एक पूरा बड़ा मैप बनाया और उस मैप वो जो मैप है वो जियो टैग मैप है। वहाँ से हमने इंफॉर्मेशन दी कि भाई फॉर एग्जाम्पल वन इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल से NDVI मैप ऑफ द फील्ड, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स मैप ऑफ द फील्ड। तो हमने उस पर लिखा भाई ये हमारा फील्ड है, तो ये इस जगह इतना NDVI लेवल है। तो हमने क्या किया, हम उस जगह कंप्यूटर पे कर्सर लेके जा रहे हैं, वो हमारा उस जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सीधे दे रहा है कि भाई ये जगह है जहाँ ये आपकी न्यूट्रिएंट लेवल्स है। हमने GPS लिया, उस जगह गए और देखा भाई हाँ सही में न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है या नहीं। So this was about monitoring. Now this is also remote monitoring, drones that I was talking about. Now maybe you have some handheld sensors. You go close to the field, you take the readings close to the field, and then you आपने वहाँ क्लिक किया and this because your sensors are smart now. Okay, आपने क्लिक किया and this system goes to your controller और वहाँ उसने नोट किया, कोऑर्डिनेट भी नोट किया और उसका जो है लेवल भी जो है नोट किया. This is all about what? Monitoring of field. Now when we talk about prediction, so obviously each one of us know that when we have a proper data, okay, जब हमारे पास proper data available है, then we can develop good models which can give us a very good insights, very good predictions for a future. कि for example अगर हमने लिखा कि अगर environmental conditions ये हो गया, I'll just give a one example about that. You know about scab, right? Each one of you know about scab is one of the disease that is affecting our farms. Apple farms mostly, scab. So how this scab disease होगा? इसमें क्या होता है कि previous, I'm not expert in fruit science, but I know something about it. आपका एक बैक्टीरिया रहता है, that bacteria is known as Venturiae nippers. Okay, वो maybe that was there and season जब खत्म हो गया, जो fall leaves रहते हैं, उस वजह से वो ज़मीन पे गिर गए, and they are in dormant condition. And next, when you start a next season, उस टाइम जब लीव्स वगैरह उगनी शुरू हो जाते हैं, these bacteria now again jumps from maybe from soil, maybe from that later leaves to the fresh leaves. तो वो वहाँ stick हो जाएंगे. जब वहाँ stick हो गए, still they will or still in a dot हो सकती है, या maybe chlorophyll content हो सकता है, या कोई और भी चीज़, जो भी parameter that is needed in this. So these are the sensors: humidity, moisture, illumination, pressure, temperature, pH, GPS. These are the sensors. And these sensors, अब उसके ऊपर जो control मैं छोड़ देता हूँ, because this is an actuator, I will get back to it. Now moving on to the next layer. So the first layer is perception layer. While you perceive your environment around you, this is perception layer. And the second layer is what? Network layer, which will transmit data from that perception layer to some other layer. तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें आपका connectivity है. जैसे आपकी Wi-Fi, that is also a connectivity, okay. Then you have Bluetooth. Bluetooth भी आपने सुना है, that is also a connectivity. Then you have mobile communication, 2G, 3G, 4G, whatever. But I'll give you one more network layer is showed here, that is LoRaWAN. We call it long range wide area network. For example, अभी हम जाएंगे क्लास खत्म होने के बाद, हम किसी फील्ड पे जाएंगे, ठीक है. वहाँ मैं सेंसर लेके गया, which is Wi-Fi enabled sensor, जो अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है. मैं मस्जिद के बगल में गया, वहाँ फील्ड है, आपको लगता है वहाँ वाईफाई होगा? मुश्किल ही है. मतलब वाईफाई कनेक्टिविटी जो हमारी इंस्टीट्यूट की है, मुश्किल ही है. या तो हमें मोबाइल से देना है, हम हट गए फिर वो वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं होगी, है. दिस इज ट्रू फैक्ट. सो हाउ कैन वी मिटिगेट दिस प्रॉब्लम? तो हमने क्या किया, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाईफाई वी यूज सम अदर नेटवर्क. दिस नेटवर्क इज नोन एज long range wide area network. You have one antenna, you put it in your sensor which will have a long range. उसका कितना रेंज हो सकता है? 1 किलोमीटर हो सकता है या 10 किलोमीटर भी हो सकता है. Okay, now you have one more antenna that is in your control station, that is located maybe 1 kilometer radius or 10 kilometer radius range, and transmitting that data from that sensor to that control station. अब control station मान लीजिए मेरी लैब है, अब उसमें वहाँ तो वाईफाई है, ठीक है. And the data is being transmitted from where? From the field to the control station. Control station में data आ गया. Control station I have Wi-Fi, and through that Wi-Fi I can feed this data into the cloud. बस cloud में गया, फिर कोई भी बंदा है, कहीं भी बैठा हुआ, वो उसको access कर सकता है, उसको use कर सकता है. So this is the जो ये LoRaWAN है, this is very advantageous about that जो agriculture systems हमारे हैं, ठीक है. So now moving on to the next layer, that is application layer, ठीक है.
तो एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं, पहले हम मॉनिटरिंग ही कर रहे हैं, जो भी डेटा हमारा आ रहा है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, देन उसको मैनेज कर रहे हैं। अब इस जो मैंने रिमोट सर्वर आपको बोला, रिमोट सर्वर में आपकी अब ऐसी मॉडल्स लगे हुए हैं जो इस डेटा को ले रहे हैं और कुछ प्रिडिक्शंस निकाल रहे हैं। नाउ बिफोर आई मूव ऑन कंटिन्यू दिस आई हैव टू introduce you to one more technology, then we can understand what these things are actually. अब जो ये मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ कि मॉडल बन रहा है, एआई मॉडल बन रहा है। अब ये एआई मॉडल जो है इसको बनाने, इसमें आप बहुत सारा डेटा पहले ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने इमेज ले, हज़ारों इमेज है, एक इमेज कितनी MB की रहती है, 200 MB GB तक की भी रहती है, ठीक है ना, वो ये ले रहा है। अब आपने मान लो इसमें 10,000 इमेज लिए, इससे आपने मॉडल बनाया है। ये जो मॉडल बनता है ना, ये बहुत हेवी मॉडल बनता है, ठीक है, ये बहुत जीबीज में रहता है ये मॉडल। अब आपने ये मॉडल बनाया, अब आप क्या करोगे, इसको, इस मॉडल को आप डिप्लॉय करोगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लेते हैं, जो ये है, जो डिसीज प्रेडिक्शन हम करते हैं ना लीव्स वगैरह से, या फ्लावर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, या जो भी, उसमें एक मॉडल रहता है जिसमें पहले ही उन्होंने जो है बहुत सारी इमेज फीड की होती है, उस इमेज से वो लर्न करता है और फिर एक मॉडल बनता है। अगर मैंने पूरा मॉडल इस मोबाइल फोन में डाल दिया, लेकिन इसकी मेमोरी तो लिमिटेड है, मान लीजिए मेरा 10 GB का मॉडल है, मैंने इस मोबाइल फोन में डाल दिया, तो इसकी मेमोरी होनी चाहिए ना 10 GB। तब मैंने इसमें मॉडल डाला, ऐप बनाई, ऐप से फोटो लिया, वो इस मॉडल के थ्रू गया, फिर आउटपुट आया, फिर ऐप के थ्रू आउटपुट आया, भाई ये डिजीज है या डिजीज, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इट इज। तो वन मोर ऑप्शन इज दैट आई विल यूज दिस डिवाइस जस्ट फॉर अ डेटा कलेक्शन। मैंने डेटा लिया और इस डेटा को मैंने क्लाउड में डाला, ठीक है, वो तो आराम कुछ GB कुछ MBs का डेटा है, वो मैंने क्लाउड में डाला, और क्लाउड में बहुत अच्छी मेमोरी एलोकेट की गई है जिसमें वो बड़ा मॉडल जो है जो बैठ सकता है। तो उस मॉडल में हमने डाला, वहाँ से एक आउटपुट आया, वहाँ से क्या आउटपुट आएगा, वहाँ से आउटपुट आएगा इस कैप है, ऑल्टरनेरिया है, या कोई और है, दैट्स एन एक स्ट्रिंग है, और उसका तो कुछ KBs में उसका वो डेटा है, वो वापस आया वहाँ से मेरे मोबाइल पे, ये पाई है, ये डिजीज है। So what I am saying is that we need to have a remote server where these big data or where these big models will actually be there, and we'll simply send the data and we'll get output from it. अब ये एक चीज़ है। दूसरा एक चीज़ है, मेरी अनमेड मशीनरी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा उसमें जा रहा हूँ तो आप मुझे रोक सकते हैं। मेरी अनमेड मशीनरी है, और अनमेड मशीनरी जो है फॉर एग्जाम्पल वीड कंट्रोल मशीनरी है। वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से जा रही है और देख रहा है कि वीड्स कहाँ है, वहाँ मुझे उसको वीडिसाइड अप्लाई करना हो, जहाँ वीड्स नहीं है वहाँ वीडिसाइड अप्लाई नहीं करना है। या तो इसी मशीन में पूरा सिस्टम होना चाहिए जो वीड्स को क्लासीफाई करे, फिर वो मॉडल रन करे, इसी में होना है। या दूसरा ये कि उसने इमेज ले ली, जब उसने इमेज ली उसने वो किसको ट्रांसफर किया, क्लाउड को ट्रांसफर किया, क्लाउड ने वहाँ से इसको इनपुट किया, हाँ दिस एट दिस लोकेशन वेयर यू आर, दिस इज द वीड, अप्लाई फर्टिलाइजर। बट यू कैन थिंक दैट हाउ फास्ट दिस सिस्टम शुड बी, कि वो इमेज ले रहा है, फिर क्लाउड में ट्रांसफर कर रहा है, क्लाउड से फिर वापस डेटा आ रहा है, इन द मीन टाइम ये रन भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी सिम जो ये वीडिसाइड एप्लीकेटर है 0.5 किलोमीटर पर आवर भी इसकी स्पीड है, इतने कम समय में मे बी इट मे नीड 5 seconds टू सेंड द डेटा, गेट द आउटपुट फ्रॉम दैट मशीन एंड अप्लाई द फर्टिलाइजर। सो अगर हमारे सिस्टम इतने एफिशिएंट है इन दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम वो कर सकते हैं, देन वी कैन डू दिस cloud application in our real-time applicators also. It is also possible and people have done it. Similar thing आपके drones में भी होता है, उसमें जो है on board computational system नहीं रहता, वो भी किसको देते हैं, वो भी LoRa टेक्नोलॉजी से या क्लाउड से डेटा ट्रांसफर करते हैं, फिर उनको आउटपुट मिलता है, फिर उससे वो डिसीजंस देते हैं। Now you take the management decisions. Now what you need to do is that you need to control the thing. इसमें इरिगेशन की बात कर रहा हूँ, अब इरिगेशन अप्लाई कर दी है। Now again it goes down, जो वहाँ से डिसीजन आ गया, इरिगेशन अप्लाई करनी है, इतनी इरिगेशन अप्लाई करनी है। Now it goes back to the network layer, transmits this data to our perception layer, where we have what? Where we have controllers or actuators. जहाँ पंप एक्चुएटर मीन जो एक्चुएट करे पंप को या मोटर को ऑन करे, एक्चुएट करे, वहाँ वो एक्चुएटर्स लगे हुए हैं और वो जो है ऑटोमेट कर रहे हैं हमारे ऑपरेशन। Is it clear? Yes. So these are some of the devices which actually we use for these automation and robotics things. जो अभी मैं अगर बात करूँ कितने लोगों ने ये सब चीज़ें देखी है,
I have seen. You have seen which में? यहाँ पे भी है फ्लोरिकल्चर में वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ से. I'm saying about these chips वगैरह यहाँ. No, chips की बात वहाँ machinery भी है. Anybody has seen this chip? No. Believe me, these chips are being used by जो हमारे अब 10th क्लास के या 9th 8th क्लास के बच्चे हैं वो भी अब यूज करना शुरू कर रहे हैं. मोबाइल these things I'm talking about. मोबाइल में तो डिफरेंट चीज़ है. मेरे पास कुछ दिनों पहले एक बच्चा आया. He was 6th 7th class student. So he is telling me that I want to make a drone which will go into the field and apply some sort of जो ये है a pollinator, artificial pollinator. So I told him, do you know about Arduino? He told me, yeah, I have used Arduino. I have made one project out of Arduino. So this जो ये Arduino है, this is actually a microcontroller, a programmable device that I was discussing with you, which we can program and take appropriate decisions. तो बच्चे भी अब इसका जो है use करने लगे हैं. How popular they are in our society. So this is ये कितना छोटा चीज़ है, Raspberry Pi. It's of the size of my palm. जो मेरा हाथ बड़ा है इतना ही size का है. And believe me, this is a computer. This is we call it single board computer, mini computer. अब आप यहाँ से देखिए इसमें कुछ जैसे इसमें रखते हैं जहाँ पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं. So this is also a mini computer. And this एक चीज़ में इसमें yeah this node MCU. This is similar to Arduino, but you can see that it has a Wi-Fi. It can take the Wi-Fi signals also. So these are some of the devices by which you can start with if you want to do this type of IoT and other applications. ये मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ये जो कितना डेटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं. कुछ डेटा जो है बाइट्स पर सेकंड. जैसे आप एक वर्ड फाइल बनाते हैं उसमें आप एक ही पेज लेते हैं तो KB 1 KB 2 KB इतनी फाइल बनती है kbps. अगर आप इमेज की बात करें दैट इज mbps मेगाबाइट्स. और अगर आप वीडियो वगैरह की कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग ऑफ द वीडियो की बात करें इट बिकम्स gbps. तो आप इस डेटा को हम कंटिन्यूसली कैसे ट्रांसमिट करें और इसकी रेंज कितनी होगी वो भी इसमें लिखा हुआ है. जितनी रेंज थोड़ा ज़्यादा होती है ना उतना जो डेटा ट्रांसमिशन का वॉल्यूम है वो कम होता है लेकिन यू कैन ट्रांसमिट इट टू द लॉन्गर डिस्टेंसेस. ठीक है. सो you have LAN, Wi-Fi, then you have wide area network, you have 2G, 3G, then you have LoRa and other technologies also. Artificial intelligence I have already introduced to you, but let me give you a layman's view of artificial intelligence. You have one data set, you have loaded that data set. For example, आपको classify करनी है diseases, ठीक है, humans की diseases या plants की diseases, whatever. प्लांट्स की डिजीजेस आपको लीफ से आइडेंटिफाई करनी है. आपने लीफ के फोटोग्राफ दिए और आपने उसको क्लासिफाई किया उस डेटा सेट को. ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये स्कैप के फोटोग्राफ्स हैं. एक फोल्डर में डाल दिए. ये जो है ऑर्डिनेरिया की है दूसरे में डाल दिया फिर तीसरे में डाल दिया. 5 डिजीज के आपने डेटा सेट बना दिए. देन यू समराइज द डेटा, यू विजुअलाइजिंग द डेटा एंड इवैल्यूएटिंग सम एल्गोरिथम्स. अब इसके बाद कुछ एल्गोरिथम्स आप इवैल्यूएट कर रहे हो एंड मेकिंग सम प्रेडिक्शंस. अब ये एक सॉर्ट ऑफ एक मशीन थी, एक बच्चा था जिसने सीख लिया. ठीक है, वो हैज लर्न. अब मशीन है उसने लर्न किया कि अच्छा ये इमेज जब थी जब इस टाइप का पैटर्न था ये स्कैप था. अब इसने पूरी मेमोरी में आपने मेमोराइज किया. जैसे आप बच्चे को सिखाते हैं ना, जब बच्चा सीखता है उसको बोलते हैं भाई ये जो है ये फलानी चीज़ है, ये ए है, ये बी है. वो पैटर्न्स को रिमेंबर करता है. ऐसे ही मशीन्स को भी हम लर्न करा सकते हैं, ऐसी चीज़ें उनको सिखा सकते हैं. जब हमने उसको सिखाया तब आप कोई भी चीज़ को दो तो वो जो है अप्रोप्रिएटली आपको डिसीजन देगा कि ये क्या है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपने बच्चों को गलत चीज़ें सिखाई, मतलब ये मोबाइल फ़ोन है मैंने उसको बोला कि ये रिमोट है तो वो गलत ही सीखेगा. इसीलिए इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट आवर डेटा इन दिस AI सिस्टम शुड बी रिलायबल. अगर आप जंक डेटा लेके आएंगे द जंक यू विल फीड टू दिस सिस्टम, आउटपुट भी आपका जंक ही मिलेगा. देन यू विल से ये तो गलत बोल रहा है, ये तो स्कैम है ही नहीं. The problem is basically you have not taken the data properly, you have not labeled your data properly. So I had put some slides about this automation in greenhouses also. I guess we have already exceeded our time, right? No, we can wait for 10-15 minutes. Okay, I'll just briefly tell you about maybe मुझे भी ये सीखना है अभी. I have not work directly in automation of the greenhouses, but
these are the technologies which you can use in automation of the greenhouses also directly. There is no doubt about it. For example, what are the things that we need to regulate in greenhouses? Maybe temperature, है ना? टेम्परेचर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, उसको या तो बढ़ाना है या कम करना है. इसी तरह ह्यूमिडिटी, वो भी हमें देखनी है कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए या क्या, जो फैन आप ऑन करते हो. इसी तरह इल्यूमिनेशन भी हमें उसकी कंट्रोल करनी है. अगर हम वर्टिकल फार्मिंग की बात, इंडोर फार्मिंग की बात करें तो हमें उसमें इल्यूमिनेशन जो है, पर्टिकुलर इल्यूमिनेशन वो भी कंट्रोल करनी है. देन वी हैव टू टेक द डिसीजंस अबाउट इट कि हमें अब ग्रीन हाउस यहाँ तो मैनुअली आप करते हैं कोई चीज़ अप्लाई, लेकिन जो वर्टिकल फार्मिंग की बात करें वहाँ ऑटोमेटिकली आपके कुछ सिस्टम्स लगे हुए हैं, एनपी के सिस्टम्स, वो जो फ्लो हो रहे हैं. अगर हम सॉइललेस कल्टीवेशन की बात करें, ठीक है, तो वो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर कितना उसमें रिक्वायर होना चाहिए, उसमें कंट्रोलर्स होंगे जो उसमें वो उतने क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स डालेंगे. इसी तरह आपके कुछ गैसेस भी कंट्रोल करने होंगे, जैसे CO2 यहाँ लिखा हुआ है. इसी तरह नेचुरल वेंटिलेशन, फोर्स वेंटिलेशन, फॉगिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें आपको जो है चिलर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया देन यू नीड टू ऑन दिस चिलर चिलिंग सिस्टम्स, एंड अगर टेम्परेचर कम होगा देन हॉट एयर सिस्टम्स आपके एसी वगैरह को एक्टिवेट करने होंगे. सो इसमें भी जैसे उसमें लेयर्स थे, इसमें भी लेयर्स हैं. पहला लेयर आपका ग्रीन हाउसेज है जिसमें आपको कुछ डिसीजंस लेने. फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करता है. आपको लगेगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम हो रहा है. जब आपको लगेगा कम हो रहा है, आपको कैसे लगेगा ये कम हो रहा है? हाउ विल यू गेट टू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड? सेंसर्स ऑब्वियसली. सो यू विल हैव अ कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर हियर, एंड यू नीड जो कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर अगर आपके पास है, then you need to have analytics also कि which carbon dioxide is most suitable at this time, at this cropping stage. So how can you know that? When you have some predictions also. So अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर है then you can activate this जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर. इसी तरह इरिगेशन के लिए आपको मोटर जो है वो आप ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हो, ठीक. देन दिस इज द फैन. आपको वेंटिलेशन की जरूरत है, आप फैन को ऑन ऑफ कर सकते हो. ये नेचुरल वेंटिलेशन है. आप जो उसके साइड्स के डोर्स वगैरह या जो भी साइड वेंट्स वगैरह वो आप खोल सकते हो. इसी तरह ये चिलर या जो हॉट सिस्टम्स है वो आप उसको एक्टिवेट करा सकते हो. सो दिस इज बेसिकली द सेम थिंग्स आर इन ग्रीन हाउस आल्सो, द सेम थिंग्स आर इन द ओपन फील्ड. नाउ हियर यू नीड टू कंट्रोल द गैसेस आल्सो. सो इट्स नॉट ओनली यू विल हैव वन ग्रीन हाउस, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ 10-15 ग्रीन हाउसेस, ठीक है. यहाँ का एक फार्म मैनेजर है, वो ऊपर बैठा हुआ है एंड इट इज लुकिंग इन एवरी ग्रीन हाउस, ठीक है. उसका जॉब ये है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी ग्रीन हाउसेस की जो प्लांट्स की ऑप्टिमम कंडीशंस मेंटेन होनी चाहिए. सो देन वी कैन कनेक्ट ऑल these greenhouses to a single system and we can analyze the condition of each greenhouse. So one more thing that is important is that everything will not be automatic. अगर हम कुछ भी करें तो सब चीज़ें तो ऑटोमेटिक नहीं होगी ना. फॉर एग्जाम्पल वहाँ कोई ऑपरेटर आया या कोई ऐसा ऑपरेशन है जो मैनुअली करना पड़ेगा. आपको फर्टिलाइजर अप्लाई करना पड़ेगा, वो मैनुअली आपको करना है. आप जा रहे हो वहाँ ग्रीन हाउस में, आप फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं, या आपने जो है उसका दरवाज़ा खोला, आपको अंदर जाना था, ठीक है. दरवाज़ा जब आपने खोला तो ये कंडीशन डिस्टर्ब हो गई. इसी तरह कोई और इनपुट है वो आपको अप्लाई करना है मैनुअली. तो एक लेजर सिस्टम भी होना चाहिए ना कि भाई किस बंदे ने कब इतना फर्टिलाइजर अप्लाई किया. तो जैसे हम लेजर मेंटेन करते हैं ना, डेटा मेंटेन करते हैं, तो इसी तरह इस ऑटोमेटिक सिस्टम में भी वो लेजर सिस्टम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक लेजरिंग सिस्टम. एंड दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अब आपको मैनुअल चीज़ें जो थी, मैनुअल चीज़ें भी आप उसमें इंकॉर्पोरेट कर रहे हो. जब आप मैनुअल चीज़ें भी इंकॉर्पोरेट कर रहे हो, देन एट द एंड ऑफ योर सीजन you can see what were the effect of these manual things also. So this is then you have data collection, data processing, prediction, optimization and control. These are the steps. ये भी कुछ और चीजें हैं. I'll now go to what things we have done. We have just maybe started very recently, but we are also taking pace what other people are doing. Some people here might know that we have also developed an Apple dog support system for apples. Likewise, IoT micro irrigation systems. We are also developing robots also for some particular operations.
Then hydrogen micro irrigation systems have also been developed. Some work is being done on that remote sensing and GIS also, and some other things also. I will just try to show you. So this is a simple one of the crop monitoring system that we developed. जो मैं अभी आपको डेटा बोल रहा था, अगर एक फार्मर को टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लीफ वेटनेस, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल पीएच, सॉइल एनपीके, अगर ये 6-7 डेटा भी उसको पता चले ना अपने फील्ड के, in a low cost, it is more than sufficient. So in that perspective, we designed this system. We installed some sensors here, and जो ये प्रोग्रामेबल डिवाइस है, हमने उसको भी इंस्टॉल किया, उस सारी डेटा को क्लाउड में डाला, उसके बाद जो है उसकी मोबाइल फोन में उसकी जो है एनालिटिक्स वगैरह वो डेटा मिल रहा है. That was a simple system, कोई कंट्रोल नहीं था इसको, just recording of the thing. But I believe that this system can also be very useful to the farmer. Similarly, I am trying to show you a video. अगर ये play होता है. Video तो नहीं हो रहा, but I'll just what we have developed. So, okay, this is the project that I am currently working in. I'll just give a brief introduction about it. This is actually an autonomous robotic sprayer that we are developing. You have seen the plants, like different plants have different volumes, okay, and there is spacing between the plant. Also, one plant is there, then interrow spacing, and then there is the next plant. But we don't know how much spray you need to apply on that plant. वो कैसे decide होगा कि जितना बड़ा plant होगा उसी हिसाब से आप अप्लाई करेंगे. जो अभी farmers अप्लाई करते हैं manually, they simply go to the field and put apply that fungicides, जो भी pesticides apply करते हैं, और जब वो dripping point पे पहुंच जाता है, then they will stop. But the actual thing is that we need to know the bulk volume of that plant, and according to that bulk volume, we need to spray. So this is the one thing. The second thing is that there should be some machine which will autonomously navigate through these orchards and will spray without the human need. Okay, so with that in mind, we have developed this. That is, एक साल में इसमें हो गया. This is an intelligent sprayer, intelligent robotic sprayer. What it is doing is that, for example, this is a plant. It is sensing this plant and measuring the volume of this plant with the sensor in the real time. And then when the sprayer goes to that, close to that plant, then according to the volume of this, जो भी इसका वो है, वो spray कर रहा है. So lot of sensors are involved in first detection of the canopy. आपने ये देखिए, आप ये RGB इमेज, सिंपल इमेज है इसकी, जो हमारे फील्ड्स हैं. उसके बाद हमने कुछ सेंसर्स इसमें निकाले जो कि सॉर्ट ऑफ ऐसा एक क्लाउड पॉइंट्स देता है इसका प्लांट का. उस क्लाउड पॉइंट को फिर हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और रिकंस्ट्रक्शन के बाद ऐसा एक मैश मिलता है, और उस मैश में पूरा वॉल्यूम मिलता है प्लांट का. जब हमें वॉल्यूम पता चला एक प्लांट का, फिर उसके बाद जो स्प्रेइंग सिस्टम्स है उसमें सिग्नल जाती है कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द प्लांट एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ द स्प्रे दैट यू नीड टू अप्लाई ऑन टू दैट प्लांट, और अकॉर्डिंगली उतना स्प्रे होता है. So this is not only thing that we have in this, we have lot of things in this. ये farmer को बोलेगा which type of pesticide you need to apply, when you need to apply, what are the इस टाइम कौन सा स्टेज है, उस स्टेज में आपको कौन सा फर्टिलाइजर अप्लाई करना है. So this was the one thing that we have developed, and the second, I guess, was okay. This is one more thing. It is an auto anti-hail net system. अब आपको पता है कि hails भी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो one startup came to us that I want to develop an automatic that anti-hail net system. तो दो चीज़ें हैं. एक ये है कि आप आपके क्रॉप्स जो है, आपके ऑर्चर्ड जो है, उसमें कंटिन्यूसली आप नेट लगा सकते हैं, काम खत्म. जब भी ये हेल का खतरा होगा उसमें ऑलरेडी नेट लगी हुई. बट द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब आप नेट उसमें लगाते हो तो जो सनलाइट वगैरह है उसको आप रिस्ट्रिक्ट करते हो. ठीक है. सो इट इज़ बेटर कि ये जो नेट है अगर ये क्लोज होती और जब हेल आता उस टाइम ये खुल जाती, दैट वुड हैव बीन एडवांटेज. तो व्हाट वी डिड इज दैट वी डेवलप्ड अ सेंसर व्हिच विल डिटेक्ट हेल. जो ही हेल आ गया वो डिटेक्ट हेल करेगा, एंड विद इन 5 सेकंड्स ये पूरा सिस्टम जो है डिप्लॉय हो जाता है फील्ड पे, एंड होल फील्ड गेट्स कवर्ड बाय द net. उसमें एक वीडियो था, बट unfortunately video is not playing here. So if you have any questions you can ask me, and then
last thing with this I will conclude is that traceability system. Okay? For example, recently I was in one more country. The issue was that I needed to have an halal meat there. ठीक है, मैं स्टोर पे जाता था तो वहाँ मैंने एक पैकेट था उसमें लिखा था हलाल मीट. अब मैं उसमें जा रहा हूँ, उसके बैकग्राउंड में तो वो बेसिकली प्रोडक्ट वॉज फ्रॉम इंडोनेशिया. ठीक है, उसका जो है 1 महीना पहले उसकी पैकिंग हो गई थी. एंड इट वाज शोइंग द एक्सपायरी डेट आफ्टर मे बी 1 ईयर. 1 साल का एक्सपायरी उसका था. So, but my point was that whether this is really halal or not, what is the exact origin of that, कहाँ से आया, क्या आया. For दूसरी हम एग्जांपल लेंगे. फॉर एग्जांपल हमारा एप्पल है, ये दुबई चला गया, एंड दीज पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द एग्जैक्ट कंडीशन इन विच दिस एप्पल वाज ग्रोन. उसमें कौन से पेस्टिसाइड अप्लाई किए गए, कब किए गए, इसका जो रेसिड्यू एनालिसिस किया गया वो किस लैब में किया गया, तो कितना रेसिड्यू एनालिसिस था. अगर उस पर एक सिंपल सा एक QR कोड होता, जो वो बंदा वहाँ जाके QR कोड को स्कैन करता, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी क्रॉपिंग स्टेज की वो पता चलती, ट्रेसिबिलिटी पता चलती है. अच्छा, ये एप्पल जो है कश्मीर का है, ये फलानी फील्ड का है, और इसमें जो है ये वैरायटी का एप्पल था, इसमें ये जो वैरायटी थी गाला मासिया जो भी, और इन स्टेज पे इसको फर्टिलाइजर अप्लाई किया गया, और ये फिर इरिगेशन अप्लाई की गई, और फिर जो है हार्वेस्ट किया गया, इस स्टोरेज कंडीशन में इसको डाला गया, और इस स्टोरेज कंडीशन से इस डेट पे डाला गया, और इस डेट पे ये आपकी इस दुकान पे है. हाउ एफिशिएंटली सिस्टम वुड हैव बीन, मतलब अ सॉर्ट ऑफ जो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है हर एक चीज़ का. जैसे हलाल फूड का ऑप्शन हम बोलते हैं कि रियली हलाल है कि नहीं, ऑर्गेनिक फूड रियली में हलाल है कि नहीं. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस ट्रेसिबिलिटी इज ऑल्सो पॉसिबल व्हेन वी हैव दिस IoT and AI technologies embedded in our system. So that's all I have in this lecture. If you have any questions, you can ask the questions. So यहाँ पे कहीं इंस्टॉल आपने किया हो? ये सिस्टम so this is very important. जब भी हम किसी को ये चीज़ें बताते हैं ना कि भाई this and the question is that do we have any sort of blueprint available to us? So the good news is that we have got some project in HEDP also and to some other funding agencies also, while we are establishing the blueprint of these facilities, so that people will come here, it will say automation in irrigation, fertigation system. So they should come and see what automation in irrigation. So we are installing maybe within next 6 months, you will see the complete farm will be automated. And similarly, when we talk about automation of the greenhouses, so we are also contemplating that all the greenhouses which are in at least in starting from the SCOS campus, these all greenhouses will be automated and all the data will be recorded. Maybe next 6 months only. अभी हम जब ग्रीन हाउस इंस्टॉल करते हैं उसको हम बाद में भी ऑटोमेट करते हैं. Yes. That's what we are doing. We have already installed many greenhouses here. So the next greenhouses are installed, and our next step is that we are going to automate these greenhouses. अब सेंसर की जो बात कर रहे थे, सेंसर्स हमने यूज कर लिए, उसका जो कंट्रोल है वो कहाँ पे रहेगा? मान लीजिए मैं फार्मर हूँ, मेरे पास ग्रीन हाउस है, वहाँ सेंसर मैंने लगा. Yes. तो कंट्रोल कहाँ पे रहेगा? कंट्रोल आप जहाँ रखना चाहते हैं. That is the in your phone. That's the beauty of these technologies. Anywhere, if you are not in that place, if you are not in that region, you are in some other region. From that region also you can control. That means with the help of internet, I can control my farms which are located maybe other place also. Yes, obviously. मैंने आपको क्या बोला कि जो data है, we are putting this data and we are putting these control commands in what? Cloud. जब cloud में गया तो cloud you can access from any part of the world. ऑटोमेट कर रहे हैं इसको. Existing आपका जो green house है. Right. So what is the cost? Let us say as on date, cost is increasing, but what is the? See, that all depends upon the technology that you are using. Okay. I don't have any clear cut figures for the cost. That obviously will depend upon the technology that you are using. अगर आप reliable, redundant technology use करना है, उसमें obviously cost ज़्यादा होगी. But automation can be done at a low cost only because of the fact that our sensors have become very low cost and reliable also. And at the same time, our computational systems have also the cost of computational systems have also gone down. But I don't have exact figures on how much cost will take. ऐसे है ना जो हमारे जैसे बाहर पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस, अगर उनमें जैसे वेदर सिस्टम लगाया जाए या ऐसे सेंसर अंदर लगाया जाए, मुझे लगता है by 10-15 lakh. Yes, obviously, but we are
जो मैं आपको बोला ना, जो हम सिस्टम लगा रहे हैं, तो what we are expecting is at least 5 to 7 लाख हमारा एक ग्रीन हाउस जो है वो ऑटोमेट होना चाहिए। What is the size of the greenhouse? जो आपका वही 80 by 30 का शायद 250 meters 250 square, I think. 250 square meters. इवन दो आई टेल यू ऑनेस्टली, अब मसला ये है कि सर्टिफिकेशन का मसला है और रिलायबिलिटी का मसला है, अदरवाइज आई कैन आल्सो डू इट विद 5000 रुपीस। सर व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फॉल्ट? अगर सेंसर्स में इलेक्ट्रिक फॉल्ट आया तो हमारा ग्रीन हाउस में जो कल्टीवेशन होगी वो तो बर्बाद होगी ना एट वंस। He is talking about that power supply. What is the source of that power supply about these sensors and controlling these? So the thing is that जो भी हम अभी सेंसर्स आते हैं ना, जो हम फील्ड में डिप्लॉय करते हैं, मैंने आपको बोला फील्ड में हम सेंसर्स डिप्लॉय करते हैं, फिर तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ना। दिस इज क्वेश्चन दैट शुड बी योर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ मिलता है, जो भी हम सेंसर ऑपरेट कर रहे हैं या कंट्रोलर ऑपरेट कर रहे हैं, उसका जो पावर है वो कहाँ से आता है। सर पावर की बात मैं नहीं कर रहा। नहीं, I will get back to your question also. Let me answer this question first. The first thing is that जो भी हमारे पास स्मार्ट सेंसर्स आ रहे हैं, they have inbuilt power supply system. ठीक है? Even some sensors are there which have a power supply system which can last for 5 years. ऐसे भी हमारे पास सेंसर्स हैं which can last for 5 years. Even though अगर ऐसा कोई है जिसमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, then we can simply put a battery and a solar panel which will supply its जो पावर सप्लाई नीड्स रहती है। ठीक है? एंड वन मोर थिंग, ये बोला कि एब्रप्ट पावर फेलियर हो जाती है। जब हम ये अपना सिस्टम बनाते हैं, जैसे हम यहाँ भी कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि ये जो हम सिस्टम बनाए ये कैसे होने चाहिए। सो व्हाट वी वांट इज दैट वी वांट दीज सिस्टम्स एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स। ठीक है? इनमें एक इनहेरेंट पावर सिस्टम्स होनी चाहिए कि दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल पावर सप्लाई। जैसे सोलर का इस्तेमाल अप्रोप्रिएटली करना है। अब बैटरीज की मैं बात करूँ, पहले हमें बैटरीज आती थी, दैट बैटरीज वर बिग। ठीक है? जो हमारे पास ये थी क्या बोलते हैं, लेड एसिड बैटरीज, बड़े बड़े बैटरीज थे और उनकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी। नाउ वी हैव लिथियम आयन बैटरीज, वी हैव लिथियम पॉलीमर बैटरीज, द कैपेसिटी इज मच हायर एंड द साइज इज वेरी स्मॉल। सो दीज आर द maybe technologies which can mitigate the effects of these electricity and other things. Any other question?